everyone, and welcome back to thorough newspaper analysis, which is brought to you by LawSikho. Let's see what articles we will be discussing today. So basically आज हमारा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से एक ही आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ज्यादातर आर्टिकल्स या तो न्यूक्लियर पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. So you can also refer them anytime. So the article we will be discussing today is "At stake is our bodily integrity." So this is from the Hindu and it has been written by Tanisha Ranjit on page number 7. So basically ये जो आर्टिकल है वो बात करता है डेटा प्राइवेसी की. So ऐसा नहीं है कि हम पहले इसके बारे में बात नहीं कर चुके. We have already talked about the importance of data first of all and the need to keep this data safe from any kind of misuse or any kind of to say illicit use. लेकिन इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छा डायमेंशन इसको दिया हुआ है कि जहाँ पे बॉडीली इंटेग्रिटी उसको भी इंक्लूड किया हुआ है कि इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा एंड दस उसको भी इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और जो भी हमारी जो भी एजेंसी है इंस्टीट्यूशन है जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी ड्यूटी है कि वो उसको भी सेफ एंड साउंड रखे. उसको भी हम डिटेल में भी डील करेंगे. एंड देन द सेकंड वन इज द न्यूज इन फ्लैश कॉलम व्हिच इज आवर ओन इनिशिएटिव वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिस्प एंड स्मॉल न्यूज पॉइंटर्स फ्रॉम व्हिच specifically prelims kind of questions can be asked. Before that, let's have a look at the LawSikho courses that we have for you. We have the Lord of the courses, that is the Judiciary Test Prep course, which is the coaching and the classes available for the Judiciary exam preparation. You can visit it. The link is there in the description box. You can get yourself enrolled for that as well. And there हमारे पास free study material भी है, आप वो भी download कर सकते हैं from the landing page. The link is already there. We have other courses as well for CLAT, SEBI, etc. You can also visit them at any time. Now let's see that what is the multiple choice question that we have for today. आज का हमारा question क्या है? इसका अगर आंसर आपको पहले से आता है, so you can write it down in the comment section. अगर आपको नहीं आता है, आप एक guess work करते हो, तो भी अपने mind में ये exercise कीजिए that are you even able to do it or not. Which of the following would be developed as the maritime and startup hub of India? First, Lakshadweep. Second, Daman and Diu. Third, Andaman and Nicobar Islands, and fourth, Visakhapatnam. So out of these, one is the correct answer, of course, and you have to answer that which of the following, which of these would be developed as the maritime and startup hub of India. And yesterday, हमने in the previous news analysis, which was for Saturday, हमने question पूछा था कि कौन से केस में ये held हुआ था in the Supreme Court that internet is a fundamental right. So yes, one of our viewers had written the answer in the comment section. It was correct. The answer is Anuradha Bhasin versus Union of India. But then, as the hint that I had given that it is related to state of Kerala. So, अगर state wise हम बात करें, so it was the case of Fahima Shireen RK versus and others versus state of Kerala, जिसमें सबसे starting में ये hold किया गया था that it is a kind of fundamental right. So then उसको फिर पूरे it was a very then in the case of this Anuradha Bhasin versus Union of India, इसको एक और larger scale पे Supreme Court ने इसको uphold किया था. So this is the descriptive question. Data is the new wealth of the nation and thus should be safeguarded against any misuse. Comment. So the answer to this has to be written within a word limit of 250 words, which can very easily be accommodated in the comment section. So you may make an initiative to write an answer over there. Now with this, let's start the discussion for the day. Data protection, new realities and challenges. Governments around the world are increasingly using technology to combat COVID-19. अब हम सबको पता है कि जब से COVID-19 का सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, the key that can only and only be the factor जिसकी वजह से हम अपने आप को safe and sound रख सकते हैं is social distancing. So basically क्या हो रहा है कि सारे schools, colleges, institutions they were like all shut down. अभी भी reopen कर रहे हैं but they're happening at a very slow pace. So ऐसे में जब हम social distancing को follow कर रहे हैं तो technology has played a very crucial role. Like for example in the area of education. So वहाँ पे schools और colleges की जो classes हैं वो virtually ली जाती हैं. उसी तरीके से जो कोर्ट की हियरिंग है वो भी वर्चुअली ली जाती है. लाइक
ऑन दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई हैं, कीपिंग इन माइंड दी रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड टू फुलफिल इन द टाइम ऑफ कोविड-19. अब इस ऐसे टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेटा भी कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर सके. लाइक द एग्जांपल इज द आरोग्य सेतु ऐप. सो इन दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ जीपीएस ट्रैकर फॉर ऑल द ह्यूमंस एज वेल. सो जितने भी गवर्नमेंट के पास लोगों का डेटा है, तो वो अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उनका कॉन्टैक्ट, आप किसके पास आए, किसके एरिया में आप आए, किसके कॉन्टैक्ट में आप आए हो, सो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आरोग्य सेतु ऐप से मिल जाएगी. सो नाउ not only informational privacy but also autonomy, dignity, bodily integrity and equality is at stake. Now ये हम कैसे कह सकते हैं? So what happens is that in various hospitals as well, और बहुत सारे जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बहुत तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कोविड टेस्ट, या आप नॉर्मली भी जा रहे हैं, तो आपका काफी सारा डेटा जो है वो हॉस्पिटल में कलेक्ट किया जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर हो सकते हैं, बॉडी की हेल्थ का स्टेटस हो सकता है. सो बहुत सारे आपकी जो बॉडी की क्लोज एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो भी अब स्टोर की जा रही है. तो सिर्फ अब आपका कोई मेल आईडी, आपका फोन नंबर, पासवर्ड्स ही नहीं है जो स्टेक पे है. स्टेक पे एज इन दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनीवन इफ देयर इज अ पर्सन ऑफ सच सॉर्ट. बट नाउ हमारे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपकी बॉडी, आपका जो इंडिविजुअल जिसको कह सकते हैं एग्जिस्टेंस है, उससे रिलेटेड है. सो लाइक बॉडीली इंटेग्रिटी एंड इक्वालिटी इज एट स्टेक. नाउ हाउ बॉडीली इंटेग्रिटी इज एट स्टेक एंड हाउ इक्वालिटी इज एट स्टेक वी विल जस्ट सी. एंड डेटा इज यूज्ड टू गवर्न एंड रेगुलेट आवर फिजिकल बॉडीज. इसमें अब इन्होंने जो प्राइवेसी लॉ इन द मेकिंग, इन्होंने अब जो हमारा प्राइवेसी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो अभी भी बिल ही है, उसको अभी तक भी it has not been formulated as a consolidated act till date. इसीलिए बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं और डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, they say that it should be done at the earliest. And इसीलिए जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा कमिटी भी बनाई गई थी, जिन्होंने सारे ये जो है, एक्चुअली ये बिल जो है वो उसी की एक आउटपुट है, एंड दिस इज द मदर ऑफ द एंटायर process. So Justice B.N. Sri Krishna committee is related to data privacy. So this can also be a prelims point of question. Then decoding the data protection bill. So basically these are the like what it means for the consumers, government and regulatory role, so and so. So you can definitely get a screenshot of this view right now, or also you can jot it down in your notebook. Now let's understand that how bodily integrity and autonomy is at stake. अब हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से, जो ऑथर है वो किस तरह एक नया डायमेंशन देना चाहते हैं पर्सनल डेटा को या प्राइवेट डेटा को, और कैसे बॉडीली इंटेग्रिटी, एक्चुअली पहले तो हम ये जानेंगे कि ये होती क्या है और किस तरीके से ये भी स्टेक पे आ जाती है, और ऑटोनॉमी जो हमारी अपनी खुद की बॉडी पे है वो कैसे स्टेक पे आती है. लेट्स सी दैट. First, technology is used to discipline physical body. Example is Karnataka's quarantine watch. So basically here the author highlights a fact कि technology का use किया जा रहा है आजकल physical body को constrained करने के लिए. Example is the Karnataka's quarantine watch. So basically ये एक टेक्नोलॉजिकल मेथड है जो कर्नाटका गवर्नमेंट यूज कर रही है आजकल. So उसमें क्या है कि इससे जिस भी इंसान को क्वारंटाइन किया जा रहा है, अब हो सकता है इससे कई सारे लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ना होके वो अपने घरों में ही उनको होम क्वारंटीन किया जाता है. So उसमें they have to enroll themselves into this Karnataka quarantine watch, और उनको हर एक घंटे में अपनी एक सेल्फी जो है वो अपलोड करनी होती है इस क्वारंटाइन वॉच में. सो विच एक्चुअली वुड प्रूव कि आप अभी भी घर में हो, एंड दैट यू आर नॉट लिटरली वॉन्डरिंग अराउंड हियर एंड देयर, एंड दस क्वारंटीन के थ्रू आपकी बॉडीली या फिजिकल प्रेजेंस को वॉच किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी. सो दिस एक्चुअली इसके थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर की कितनी ज्यादा रीच है अब टेक्नोलॉजी की हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स में. Now this is the entire thing just we discussed. So this is the quarantine watch mobile app, and the order states that all persons observing home quarantine are required to send their selfie every 1 hour. So basically this is the entire thing we just discussed. Then the second, risk involved in sharing or leaking of personal data. Now बहुत सारा पर्सनल डेटा है, जैसे आपके as we mentioned that the personal data which is related to your body, your blood group, your to say the condition of your health, आपकी in fact आपकी photos भी, like
वी कैन इजिली हैव अ केस जहाँ पे फोटो मॉर्फिंग हो सकती है या फिर कोई भी इस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं अगर ये फोटोग्राफ्स या इस तरीके का कोई भी मटेरियल या डेटा जो है वो लीक हो जाता है. सो देयर इज अ सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लॉस. नाउ ये जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लॉस और या फिर लैक ऑफ कंट्रोल इसलिए भी ज्यादा फील हो रहा है बिकॉज वी डू नॉट हैव very to say consolidated data protection act or data protection legislation in India so far, and अभी तक जो भी है वो majorly अभी भी एक premature stage में ही है. Then greater discrimination. Now this is also a very very important and intricate point through which we need to understand कि किस तरीके से ज्यादा discrimination face करना पड़ता है. अब किनको discrimination face करना पड़ता है? Those people who mostly belong to the transgender community, because we know that we also have the LGBTQ community जिसमें जो T है वो transgender people है. So basically जो transgenders हैं उनके बारे में भी उनके जो data collection होता है it is mentioned clearly. आप सोचिए कि अगर ये नॉर्मल डेज में भी जो ये LGBTQ कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में. नाउ इमेजिन द प्लाइट अगर ये डेटा जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो ट्रांसजेंडर पीपल हैं और सो एंड सो दैट, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ टू से कि जिसको कह सकते हैं एक पॉइंट बन सकता है उन लोगों के लिए जो इस मेंटालिटी के होते हैं कि दूसरों को हरास किया जाए कुछ, बिकॉज वी ऑल नो दैट सच एलिमेंट्स डू एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. सो ऐसे लोगों को और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. सो द पोटेंशियल मिसयूज कैन लीड टू ह्यूमिलिएशन, publicly targeted and the shamed behavior that is projected towards the transgender people in our community. Then data collected can be used to re-exert control over our bodies, but obvious because जिस तरह से data का usage अभी तो positively use हो रहा है like in the आरोग्य सेतु app and all, but still if you can recall in the earlier times of this lockdown, Arogya Setu app was compulsory for all the people who had to go out of their homes in order, like जो कुछ government officials थे या कुछ जिनको by virtue of their duty या जो उनकी job profile थी उन्हें जाना पड़ता था. But then बाद में इसके खिलाफ काफी protest हुए हैं and the government also realized that the data and the to say the amount of data this Arogya Setu app has is actually putting it at a huge risk. और उसकी वजह से बहुत it is very important for the government to make sure कि किसी भी तरीके का misuse ना हो and government should as soon as possible come with similar steps. Basically here bodily integrity means ये कहता है कि bodily integrity का मतलब होता है कि हर human being का, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, हर ह्यूमन बीइंग का एक ऑटोनॉमी होती है, उसका एक खुद का पर्सनल राइट होता है अपनी खुद की बॉडी पे. सो द राइट टू सेल्फ डिटरमाइन, एज इन लाइक फॉर एग्जांपल इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू गेट अ टैटू डन on his body, so technically there is no particular thing that can really stop him because he has this bodily integrity which he has to enjoy, and this is his right and that is his fundamental and human right. So basically bodily integrity in some or the other way अगर हम interpret करें तो article 21 जो है हमारा right to life है जिसके अंदर right to dignity है, so उसके अंदर भी included है and obviously it is a human right as well. So ये bodily integrity है. So this also can be a question as to कि bodily integrity का concept अभी recently देखा गया था in context with the personal data protection. So वो क्या है? Then finally data protection legislation have not kept pace with the new please mind it was pace with the new realities and challenges, but obviously as in just that we were just discussing that India needs to have robust laws that are strong enough to make sure कि जितने स्पीड से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा अश्योरेंस हम दे सकते हैं इन लोगों को जो डेटा प्रिंसिपल्स होते हैं. बेसिकली डेटा प्रिंसिपल्स आर दोस जिनका डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड डेटा कस्टोडियन इज दैट बॉडी और अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो उस डेटा को सिक्योर रखती है या यूज करती है. सो इन दिस केस द गवर्नमेंट इज द डेटा कस्टोडियन एंड ऑल ऑफ अस हु आर गिविंग द डेटा टू द गवर्नमेंट आर द डेटा प्रिंसिपल्स. सो बेसिकली ऐसे लॉज जो डेटा प्रिंसिपल्स के डेटा को और उनका जो ट्रस्ट है डेटा कस्टोडियन में उसको मेंटेन रखे, ऐसे लॉज को तुरंत से तुरंत लेजिस्लेट हो जाना चाहिए. So that was all for the discussion. Let's see what do we have for news in flash today. Defense Ministry to impose import embargo. Basically, embargo is
कि कभी भी जब हम बार लगा देते हैं किसी भी चीज की सप्लाई पे, सो उसको हम एम्बार्गो बोलते हैं. बेसिकली जनरली ये इंटरनेशनल टर्म्स में ज्यादा यूज किया जाता है. सो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस import embargo on 101, that is 101 items beyond the given timeline to boost indigenization. Now, as we know that we are on to build an for ourselves Atmanirbhar Bharat, which is the self-reliant Bharat. तो उस कंटेक्स्ट में बहुत बहुत जरूरी है कि हम डिफेंस की फील्ड में भी अपने आप को इंडिजनाइज करें. अपने जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको प्रोक्योर करें. Now we know that since 2014, India has been the world's second largest importer of defense goods and equipments. So ये बहुत बहुत बड़ा investment है जो इंडिया करता है. जैसे अभी बहुत recently we also discussed in a few sessions ago कि अभी इंडिया ने recently जो हमारे जो फाइटर जेट्स थे, दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम फ्रांस. जो दसॉ कंपनी है फ्रांस की, वहां से हम उन जो रफाइल फाइटर जेट्स थे उनको हमने इंपोर्ट किया है. एंड दिस डील हैज actually causes billions and billions of dollars. So ऐसे scenario में it's very important that we have indigenization of these equipments. The government intends to reach a turnover of $25 billion through indigenization manufactured defense products. Second, Andaman and Nicobar to be a maritime hub. Now, here is probably the answer to your question for the day. Prime Minister Narendra Modi has announced that Andaman and Nicobar Islands, owing to its strategic importance, will be developed as a maritime and startup hub. Now, एक तो prelims question इसमें से बन ही सकता है, just the way we have asked you. Secondly, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की पोजीशनिंग को, जो उसकी लोकेशन है, उसको इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक माना गया है. सी आई जस्ट टेल यू इन अ वेरी ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट. इंडिया का मैप आपने देखा होगा. सो लाइक ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द अरेबियन सी, ऑन द राइट साइड वी हैव द बे ऑफ बंगाल. राइट साइड में ही बे ऑफ बंगाल में वी हैव बहुत, और सदर्न साइड पे साउथ ईस्ट साइड में मूव करते हैं तो वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. बेसिकली इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर है, ये टेरिटोरियल वाटर्स पे जो कंट्रोल है वो रहना चाहिए था सिर्फ इंडिया की जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है. यानी कि अगर हम ईस्ट की बात करें तो दिस साइड वी हैव लाइक जो हमारी ईस्टर्न साइड है, यानी कि हमारी उड़ीसा हो गई या फिर हमारी तेलंगाना हो गई या फिर तेलंगाना हमारी तमिलनाडु हो गई. सो ये वाला जो एरिया है यहीं तक होनी चाहिए थी. बट thanks to the location of Andaman and Nicobar Islands, that we now have a very stretched arm to in the Indian Ocean. इसीलिए कहा जाता है कि Indian Ocean is belongs to India alone. So इसीलिए हम कहते हैं कि Indian Ocean जो है, इंडिया का ही सबसे ज्यादा कंट्रोल Indian Ocean पे है, क्योंकि हमारा कंट्रोल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है. सो वहां से ही जस्ट पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का फॉल करता है, विच इज द बिगेस्ट गेटवे towards the southeast nations. So इसीलिए जो इसकी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. और इसीलिए अभी क्या था रिसेंट सिचुएशन में कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी, और इसीलिए अब जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ले डाउन किए जाएंगे, यानी कि अंडर वाटर फाइबर की जो लाइंस है वो ले डाउन किए जाएंगे ताकि बेटर कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश कर सके वहां से. सो द 12 islands of the archipelago have been selected for high impact projects. The government has projected the inauguration of the submarine optical fiber. Archipelago is nothing, simply it's a group of islands. तो कहीं पे भी आइलैंड्स होते हैं. बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि आइलैंड कोई भी ऐसा अकेला आइलैंड बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करते हैं. अक्सर क्या होता है 2-3 आइलैंड्स या कई बार बहुत सारे ग्रुप आइलैंड्स होते हैं, वो एक ग्रुप में एक साथ इन दी एक ही विसिनिटी में वो फॉल करते हैं, नियर बाय एक ही एरिया में. सो उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं. सो बेसिकली इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म. एंड थर्ड एंड फाइनली वी हैव द एग्री इंफ्रा fund. So PM Modi has launched a rupees 1 lakh crore scheme under the Agricultural Infrastructure Fund aimed at helping farmers or loans and agri-entrepreneurs. Basically, agri-entrepreneurs are those people who are trying to make any kinds of new ventures or startups in the field of agriculture. So basically, it's just entrepreneurs in the field of agriculture. Build the post-harvest agricultural infrastructure. So yes, this should be kept in mind. So this was all for today. We hope it was an interesting and informative session for you. Do consider subscribing to this channel so that you do not miss any of the updates that we have from LawSikho. So with this, thank you so much, and stay connected with us. Thank you.